What's up, ladies and gentlemen? Welcome to the second episode of the series The Turkey Diaries. जैसा कि मैंने बताया था, इस सीरीज़ में मैं शेयर करने वाला हूँ हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस टर्की घूमने का एंड ऑल्सो सम टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप कम बजट में टर्की कैसे घूम सकते हैं. हमने कवर किया था इस्तांबुल एपिसोड 1 में, जिसमें मैंने शेयर किया था द एंटायर ट्रैवल एक्सपेंस ऑफ द ट्रिप विच वॉज ओनली 65,000 रुपीज़. सो लेट्स कंटिन्यू विद द जर्नी. और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अंतालिया के बारे में, जिसे मैंने नाम दिया है द मायामी ऑफ टर्की. लेट मी शो यू व्हाई. सो आफ्टर स्पेंडिंग 3 days इन इस्तांबुल, हमने फ़्लाइट ली अंतालिया के लिए. हमने ये प्लानिंग इस ट्रिप पर आने के 2 महीने पहले ही कर ली थी व्हेन वी वर बुकिंग आवर मेन फ्लाइट टिकट्स फ्रॉम मुंबई टू इस्तांबुल. सो दिस इज़ द बिगेस्ट टिप दैट आई कैन गिव टू एनी न्यू ट्रैवलर जो ऐसी इंटरनेशनल बैकपैकर ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं, कि अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से करे. कहीं जाने के पहले उस जगह के बारे में जान ले, पढ़ ले. ठीक है, अपनी रिसर्च बहुत बारीकी से करें. खासकर कनेक्टिविटी देख ले कि क्या बेटर हो सकता है आपके लिए to save on your budget. And the reason to take a flight to Antalya was because number 1, we got the flight tickets from Istanbul for only 2,200 rupees, and secondly, we saved almost 12 hours of bus journey from Istanbul, and this helped us indirectly to spend more time in Antalya. So what you're seeing in front of you is all Mediterranean Sea. Antalya is a lot about beaches and more beaches. Antalya is located on the Mediterranean coast of southwest Turkey. यहाँ पर लार्ज स्केल डेवलपमेंट और गवर्नमेंट फंडिंग की वजह से टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है, जस्ट लाइक लास वेगस इन US. Konyaaltı Beach is a must visit place here in Antalya. And a lot of sports activities also happen here. तो अगर आपको बीचेस और शांत जगहों से प्यार है तो आपको अंतालिया ज़रूर आना चाहिए. Bir şarkının her sesinde belki bir sahil meyhanesinde belki de içtiğim sigara dumansın bir. ला पलोमा वॉज द प्लेस इन कलेची ओल्ड टाउन जहाँ हमने होटल बुक की थी. दिस कॉस्टेड अस अप्रॉक्सीमेटली 1,300 रुपीज़ पर नाइट, बट इट ऑल्सो केम विद अ स्विमिंग पूल एंड ब्रेकफास्ट वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कॉस्ट. द वाईफाई स्पीड हियर इज प्रीटी गुड इनफ एंड द रेटिंग ऑन booking.com is also 9+. Ya da kalmaz bir anlamı, ya gelirsin peşimden, ya da çık git içimden. Ya sararsın yaralarımı, ya da al bütün yaralarımı, ya bitir ve git dünyamı, ya getir
In Antalya, you will feel like Amchi Mumbai when it comes to weather. The weather here in July to September is close to 30 degrees. And these are the hottest months for Antalya. This is a bit hot compared to Istanbul, which is slightly cooler, where the weather is normally 20 to 22 degrees. So if you want to get a perfect suntan, come here in this period and you will get one. अंताल्या में अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो आप बसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उसके लिए आपको बस एक इस्तांबुल कार्ड खरीदना पड़ेगा। ये एक RFID दैट इज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है जो तकरीबन 6 to 8 लीराज में आपको मिल जाएगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। फिर यही कार्ड को आपको रिफ़िल करते रहना है फॉर ऑल योर जर्नीज़। इट वर्क्स एज अ प्रीपेड और एज अ रिचार्जेबल कार्ड, और इसकी सबसे खास बात यही है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस लाइक buses, metros, ferries and tramways all over the country. Antalya was the only place in our 10-day journey जहाँ हमने होटल बुक की थी instead of hostel. And 1300 rupees per person per night is the maximum cost that we had paid on stay in the entire trip. But just because we wanted to stay in Kalechi Old Town, we did it anyway. Kalechi. The name Kalechi means inside the Kale or inner Kale. Kale itself means castle or a fortress. And you will feel exactly the same when you walk in these European streets here. I can't hold myself back by calling them European streets, even though when I know that this part of the country, Antalya, falls in Asia. But the feeling to roam in these streets is just out of the world. The shopping experience here was just amazing, and we found some beautiful paintings for ourselves that we could go back with. So that's a wrap guys for the second episode of this vlog series, and I hope आपको अंताल्या पसंद आया होगा. And if you still want to ask us anything about Antalya, you can do that in the comment section down below. Please do like and share this video and let your friends know what is Turkey's response to Miami. Also, do subscribe to our channels The Tangy Journey and Tango Kilo अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. And hit the bell icon so that you can get the regular updates on our next episodes. And do stay tuned for a blockbuster episode which is going to be next. That is on Pamukkale and Kusadasi, the next destinations that we had visited after Antalya. Until then, stay blessed. Peace out.